नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So before we begin, we will read one verse and purport from Srimad Bhagavad Gita. So this is a verse number 8, chapter number 10.8. You can repeat after me. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samandita. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engages in my devotional service and worships me with all their hearts. Purport. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual worlds. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. He can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by fools. All Vedic literatures agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all other demigods. In the Atharva Veda, it is said, it was Krishna who in the beginning instructed Brahma in the Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again, the Narayana Upanishad describes, then the Supreme Personality of Godhead Narayan desired to create living entities. The Upanishad continues, from Narayan, Brahma is born, and from Narayan, the other demigods are also born. From Narayan, Indra is born. From Narayan, the 8 Vasus are born. From Narayan, the 11 Rudras are born. From Narayan, the 12 Adityas are born. This Narayan is an expansion of Krishna. It is said in the same Vedas, the son of Devaki Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Then it is also said, in the beginning of the creation there was only the Supreme Personality Narayan. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no stars in the sky, and there was also no sun. In the Maha Upanishad it is also described that the Lord Shiva was born from forehead of the Supreme Lord. Thus the Vedas say that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma, Shiva, who is to be worshipped. In the Moksha Dharma, Krishna also says, the patriarchs Shiva, the others are created by me, though they do not know that they are created by me because they are deluded by my illusory energy. In the Varaha Purana it is also said, Narayana is the Supreme Personality of Godhead.
and from him Brahma was born, and from whom Shiva was born. Lord Krishna is the source of all generations, and he is called the most efficient cause of everything. He said so because everything is born of me. I am the original source of all. Everything is under me, no one is above me. There is no supreme controller other than Krishna. One who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master with references from Vedic literatures engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man. In comparison to him, all others who do not know Krishna properly are but fools. Only a fool would consider Krishna to be an ordinary man. A Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. Hare Krishna. So welcome all of you to our supposed to be 6-session course, Journey of Self-Discovery. But soon we are going to cover it. Today we will begin with the second last topic and thereafter the final last topic. And after that, if you survive, we continue on Bhagavad Gita. Yes. We will. Hare Krishna. Hare Krishna. So, today's topic, the fourth session is who is God? So, quickly recall which all topics we discussed. First 5 elements. First 5 elements. Sutras. 5 sutras. What was the topic? Search for happiness. That's what happens. Right. Next, Then manual for life. The manual is required for human life. Then third, why do good things happen to bad people? Bad people. chalega wo bhi. Vice versa. Yes. Why do bad things happen to good people? And then thereafter, Who am I? okay, so many things are happening to me. Then who am I? Why all these things are happening to me and not to others? So it is only those who inquire, they can know that who they are. And people do not inquire unless and until they go through something difficult, something against their will, something they did not expect. Otherwise, if life goes on as per your desires, then nobody will become, God conscious. That's why this is an arrangement of the God. This world is designed in such a way that there will be some biggest difficulties in our life which we cannot overcome on our own. Right? And that is the subject matter of Bhagavad Gita. When Arjuna is on the battlefield of Kurukshetra, he is very much skilled. He is also determined. He had the support of all the great personalities. Even Lord Krishna himself is on the battlefield, but still Arjuna is not ready to fight. And he is crying there, I cannot fight. So he had the skill, but he did not have the will. And will is something which will play a crucial role in our life when we want to move in a certain direction. If our will is not purified by proper association, then that will can go in wrong direction. So that's why Arjuna, being a very sincere, obedient and humble devotee, he inquires from Lord Krishna, who am I? My God. And that's how the Gita expands. And we are just at the beginning of Bhagavad Gita, discussing some basic elements. And afterwards we will take chapter by chapter and verse by verse overview of Bhagavad Gita. Right? So today we will discuss who is God. So now we are all searching for the happiness, and further there are manuals, and through the manuals we come to know
that we did not follow the manual properly, and that's why things are going against us. Why do bad things happen to good people? Right? And then after that, we try to understand that who am I then? After understanding who we are the eternal spirit souls on a journey searching happiness through millions of lives. Then after that, we may have a question. Then who is the person who is controlling all these intricacies of our journey? Ups and downs. Who decides that I will be born in a particular family? Who decides that I'll earn only this much of happiness or that much of happiness? And others say money. Because money cannot buy happiness. Happiness depends on our emotional state, mental state, not on our social or all other things. So if our mind is fresh, energetic, then we can be happy. If our mind is just dwelling on some things that happened just a day ago, then we can't be in this class. Right? We'll keep on thinking. So that requires meditation to overcome these thoughts. And that's the process of mantra meditation. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's why we chant this mantra in order to overcome the tendency of the mind to just keep dwelling on those unimportant things which actually doesn't lead to any substantial productivity. Right? So that's how we come to the most important part of this course, that is, who is God? Or rather, who is that person who is controlling us? Who is controlling our lives? Who is controlling our destiny? Right? Although at one level, we are the controller of our destiny. But unless it is sanctioned by the Supreme Lord, we cannot fulfill our desires. We only can desire, and the desire will be processed and finally executed by God Himself through the agency of material nature. Right? So now, let us take an example. We'll begin with one example. So one time one professor, he asked the students, do you believe in God? Now when I am saying God, you may have your own understanding of who is God. Right? So for the time being, let us consider that entity as God, because it's very simple to then collectively define the definition. So you may think whatever you may think, that will come to the that later part. But कोई तो है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, बराबर? तो उसे भगवान कहते हैं लोग. तो हम भी भगवान कह लेते हैं अभी for the time being. आज आंटी किधर गई? आंटी आज भगवान वाली. She's absent. Absent. Okay. Where is your brother? He's not feeling well. He's Okay. got some Sick. yes. He had so many questions. Yes. Who is God? Okay. We'll give him the recording. Can you slow down this time? Rather, you can sit in your phone. Yes, sure. Yeah. So then, that professor is asking the students, please define God. When he said define God, then one of the students raised his hand and he said, God is source of all good. आप सब लोग अंग्रेजी में चलेगा कि हिंदी वाला कोई है, हिंदी चाहिए उनको. You all understand English? पीछे? Okay. भगवान की व्याख्या बताओ. भगवान कौन है? तो एक स्टूडेंट ने क्या कहा? जो सारे अच्छे चीजों के सोर्स है. Who is the source of all good things?
in our life. Then immediately the professor asked, then is the God of source of bad also? Is the God source of bad also? Then student could answer. How can he say God is the source of bad things? भगवान हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसके स्रोत कैसे हो सकते हैं? So it has different levels of understanding at multiple levels. But at one level, ultimately everything is coming from God. How? That we will see. Then he could answer. Then, after some time, Professor he actually tried to define the definition of the God. He said, as per the science के हिसाब से क्या definition है? किसी भी चीज का अस्तित्व अगर है, if something exists, then I should be able to see with my eyes, touch with my hand, बराबर, smell with my nose, taste with my tongue, बराबर. Scientific भाषा यही है आपकी, बराबर. That which we can perceive with our senses. जिसको सुन नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको सुन नहीं सकते, आइए 1000 साल जिएंगे आप. नहीं आजकल पता नहीं टाटा गई थी भूल गई अभी तेरी बहू नहीं याद है. चलेगा, हमने याद किया ना. आप हमें याद ना कर लेकिन हम आपको याद करते हैं. उसने याद नहीं दिलाते तो सच्ची दिमाग. बैठिए, आराम से बैठिए, आपकी सीट में बैठिए. या आपको ऊपर बैठना, ऊपर बैठ सकते हैं. पैर दुखते होंगे तो पैर दुखे तो बैठिए ऊपर आराम से. कौन सा क्लास? टाटा में जाती हूँ, सीनियर सिटीजन क्लास. क्या होता है उसमें? हम लोग को एक्टिविटी कराते हैं, डिमेंशिया में नहीं जाए, एस्पायर में नहीं जाए, तो फिजियोथेरेपी होगा, उसका कुछ चक्कर है. वही आज का सब्जेक्ट मैटर है हमारा. अच्छा. So उन्होंने कहा कि देखो, जिसको आंखों से देख नहीं सकते, जिसको कान से सुन नहीं सकते, जिसको टंग से टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चीज है? तो भगवान किधर है? राइट? तो उन्होंने कहा कि where is the God? है नहीं कहीं पे. फिर उसमें से एक, one of the boy, he was actually a student of Bhagavad Gita, Journey of Self-Discovery course. He had gone through that course. He suddenly raised his hand and he said, Professor, I want to ask you something. Usually, professor they ask question to the students, but here the student is asking question to the professor. Then he asks that, do you know there is something called darkness? There is something called darkness. You all agree there is darkness? The professor says, yes, of course, there is darkness. There is darkness outside, isn't it? And there is darkness also inside within our heart. Right? So he agreed, but then boy said, no, there is nothing called darkness. ऐसा कुछ होता नहीं है अंधेरा करके. Because what is darkness? Absence of love, right? So now you only define. Darkness नाम की चीज एक्चुअली होती नहीं है. जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे darkness है. बराबर? As simple as is the common sense. But क्या करें? कलयुग में common sense ही uncommon है. लोगों को common sense समझता नहीं है. They want to go through hardships of life and then ultimately they want to come to conclusion that yes कोई तो है बाबा. जब समझाने की कोशिश करते समझने का प्रयास नहीं करते लोग. So अभी like that हमारे जीवन में अगर कुछ earlier come back to the earlier question that God is source of all good, right? And if you say God is also source of all bad, means what? All bad is there in our life when God is absent.
That's the mystery. When God is absent in our life, then our lives are dark. Because God is light. God is the one who provides light. God is the one who provides illumination in our heart. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Tesham evam kampartam aham agyana jamtama nashyami atma bhavastu jnana deepyana bhasvata. I enlighten those devotees who serve me, worship me. I enlighten within their heart. ज्ञान दीपेन भास्वता. ज्ञान का दीप जलाता हूं मैं उनके हृदय के अंदर. अब वो ज्ञान का दीप हमारे हृदय में जलेगा अगर हम भगवान को बुलाएंगे. भगवान को नहीं बुलाएंगे तो नहीं दीपक जलेगा, अंधेरा रहेगा. So that's why God is source of all good, and when God is not present, we inevitably invite bad. What to do? And sometimes we only want bad. And God facilitates. Okay, you want to steal? I will give you intelligence. How to steal? Because ultimately, intelligence is coming from God only. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. That's what we read now. Everything emanates from me. And in the 15th chapter, Krishna also will say, what is that verse? सर्वस्य चाहं प्रतिसन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. मत्त स्मृति and ज्ञान. Yeah, स्मृति मत्त means me. स्मृति मतलब कुछ remember करना, right? The capacity to forget or remember is not ours. है क्या हमारा capacity? कुछ भी हमने आज सुना है, पढ़ा है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे याद करना या याद न करना की कैपेसिटी किसके पास है? हमारे पास है. अगर अभ्यास करेंगे तो है, फिर भी कभी कभी अभ्यास करने के बाद भी नहीं होती, बराबर ना? लेकिन भगवान ने याद किया. When Krishna wants and God wants to remember you, then you can remember him. You know, वृंदावन में एक जगह पे परिक्रमा करते हैं गोवर्धन. वहां पे एक जगह पे लिखा हुआ था एक बड़े वॉल पे कि जो भगवान का नाम जप करते हैं, भले उन्हें पता हो या ना हो कि भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जरूर पता चलता है कि मेरा नाम जप करना है. Sometimes we chant and we may be very inattentive, not in the mood to chant, but just क्या करें, अभी प्रोग्राम में बोला हमको एक माला करो तो हम कर लेते हैं. But don't worry. You may not remember, but God will remember and He will see, oh, He is taking my name, He is chanting my name. He will note it down. And that will come to your rescue at the time of crisis. ऐसा है ना वो? बैंक बैलेंस. जब जरूरत पड़ेगी तब भगवान खोल देंगे तुम्हारा FD. लो बेटा, एक जमाने में FD कमाया था आपने, और किसी का FD नहीं रहता. बेचारे कंगाल रहते हैं, वो लोग दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, and all the darkness and only darkness in their lives. So that's why seeing is actually not believing, isn't it? Because what we can see, we have already discussed in our first session, second session, that we have 4 defects. Our senses are imperfect. That's why we commit mistakes. Sorry, we are in illusion, and that's why we commit mistakes. And to cover mistakes, we cheat. To imperfect senses, always being under illusion and committing mistakes and cheating propensity. Because of these 4 defects, no conditioned soul can properly see or observe or understand things within this creation. 4 दोष है उसके अंदर, नहीं देख सकता ठीक से, नहीं समझ सकता वो. और फिर भी हम लोग क्या करते हैं? We rely on these senses to gain the knowledge. But rather than to gain the knowledge, we should rely on scriptures, which are given by those personalities who are beyond these 4 defects. Or 4 defects of imperfect senses,
always being under illusion, committing mistakes and cheating propensities, right? जैसे अभी देखिए ये फैन है, ये फैन घूम रहा है, ये फैन घूम रहा है, इसका इंडिकेशन क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर ना? इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखती है क्या? तो हाउ डू यू बिलीव इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर? कैसे विश्वास करते हैं आप कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है? हाउ डू यू बिलीव? घूम रहा है ना पंखा, और जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि देख के फैन घूम रहा है, आई डोंट बिलीव, कैसे घूम रहा है, हो सकता है हवा से घूम रहा हो, तो उसको शॉक लग रहा है। 440 जबरदस्त झटका, हाँ अभी है, इसमें पावर है। So sometimes we are like that. We don't want to believe in God. We want to see with our imperfect eyes. And life after life, we keep, putting the same condition on God. जब तक दिखोगे नहीं, मानूंगा नहीं। देखने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर देखने का अधिकार नहीं है, अधिकार कैसे मिलता है? By purification. By purification of our senses, by purification of our mind, intelligence. There we can see. And those who do not want to see God and they keep avoiding, then God gives them 440 का झटका, बड़ा लाइफ में कुछ तो हो जाता है, disaster. And then आज तक वो नीचे देख रहा था, यहाँ देख रहा था, वहाँ देख रहा था, ऊपर देख रहा था, ऊपर वाले तो कोई बोलता है अल्लाह, कोई बोलता है गॉड, कोई बोलता है कृष्ण, कोई बोलता है राम, but ultimately everybody remembers them finally. मदद करो, मदद करो, right? So this jhatka is for those who do not want to see God, even after being instructed by holy men. सारी दुनिया में है ना स्क्रिप्चर्स, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, इस्लाम में कुरान है, हिंदुइज्म में भगवद गीता है, और भक्त साहिब है आपके यहाँ पे, right? Like that everywhere there are scriptures. But आप अगर उसका benefit नहीं उठाना चाहते, and you always want to be in darkness, then God gives you light through jhatka, and then you come to your senses. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Right? So there is a cause. That theory is called as cause and effect. So you see the effect, behind this there is a cause. What is the cause? Here fan is moving, sorry, the effect is fan is moving, and the cause behind this is electricity, right? ये आपने वो देखा है क्या अपना puppet show देखा? नीचे घूमते रहता है puppet मस्ती में, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वाह वाह कितना अच्छा है, पापा बोलते हैं वाह देखा बहुत अच्छा है, puppet कैसे डांस कर रहा है, do not know कि ऊपर कोई उसको क्या कर रहा है, the puppeteer who is making the movements, but because small children they don't have that intelligence, they can't understand. Similarly, this world is a big show operated by Supreme Lord, and we are all puppets in the hands of our own karma. We create our karma and then God facilitates. Okay, पिछले जन्म में आपने इस व्यक्ति का अपमान किया था, इस जन्म में आपका अपमान होगा, पिछले जन्म में आपने उसको हेल्प किया था, इस जन्म में आपको हेल्प होगा, उस जन्म में आपने किसी का मर्डर किया था, इस जन्म में आपका मर्डर होगा। डिपेंड्स। जब भगवान आपके ऊपर ज्यादा कृपाशाली होते हैं, इस लाइफ टाइम का इसी लाइफ टाइम में भी देते हैं। सम टाइम डजंट गिव, ही इज सुप्रीम ऑटोक्रेट, यू कैन नॉट चैलेंज हिम। So we have to have patience for that also, right? So this is the primary definition of God, and that's why जो लोग बोलते हैं कि we don't believe in God, इसके लिए बहुत गर्ज लगता है, because there are so many proofs. Everywhere you can see the presence of God through all this, and we will see the examples. So how can you not believe in God? You require really a lot of courage to say I don't believe in God, because there are hundreds and hundreds of things which are actually proving there is God, and there is God, right? So like that,
in our life, you know, most and it's not that कि आपको दिखेंगे नहीं भगवान, दिखेंगे, कभी कभी नहीं दिखेंगे, you know, वो कहते हैं ऐसा कि if we can't see the hand of God, that is we can feel the hand of God. We may not be able to see, but we can feel, right? So this is the beginning stage. Let's try to feel, right? And that's why the beginning is through prayers, through meditation, you know, to invoke the mercy of the God that please manifest in my life. Please show me the way, show me the path. And that's why these prayers are required. You know, ये prayer कोई ऐसा ये नहीं है, किसी का business नहीं है कि अरे दुकान खोल दिया prayer का, इतने रुपए में बिक्री होगा, right? It is given by scriptures for our own benefit, right? So like that. Now we will see one by one a few examples through which you will come to know how God exists and how God is there in our lives. So first thing is creation. Creation मतलब क्या होता है? निर्माण करना किसी चीज को, बराबर? ये घर किसी ने बनाया है, राइट? बाहर आपको रोड पे गाड़ी दिखती है, वो किसी ने बनाई है? ये बैग किसी ने बनाया है? ये गुर्दम किसी ने बनाया है? ये शर्ट किसी ने सिला है? राइट? यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपने आप पैदा होगी, है क्या? So creation implies creator. जहाँ creation है वहाँ creator होना ही चाहिए, बिना creator के creation हो ही नहीं सकता. So just like ये छोटा सा घर, गाड़ी, you know, जितनी भी चीजें हैं सब बनी हुई है, उसको बनाने का कोई व्यक्ति है. Similarly, this cosmos, there are mountains, there are rivers, there are trees, the sun is rising, sun is setting, the moon is there, right? Everything is, you know, as what we see around. There has to be some creator for this. बिना creator के कैसे पैदा होगा? अपने आप पैदा होगा क्या? ऐसा बोलते हैं लोग, आपके साइंस वाले, यहीं पे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. Of course, science has both sides, good and bad. So we are not against science. Even Newton, he himself was a celibate monk. You know, he was a monk and celibate. तो आज के साइंटिस्ट लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए न्यूटन से. He was a believer in God. Similarly, our great mathematician in India, Ramanujan, he was also a great believer in God, right? So, as per they have one theory that is called Big Bang. आपने सुना होगा. बताते हैं कि बिग बैंग हुआ और वहां से गाड़ी बाहर आ गया, एक हारमोनियम बाहर आ गया जिसमें से सुरीला आवाज आता है. कभी हुआ है क्या ऐसा? बिग बैंग से कभी कुछ बाहर निकला है? लेकिन हम इतने अनपढ़ गवार हैं in the name of modernity and education and scientific research. अंधश्रद्धा, ये असली अंधश्रद्धा है, superstition. Blindly believe करते हैं, right? Yes, stupid लोग बाहर निकले. And even if there is a big bang, suppose अगर हमने मान भी लिया, big bang करवाने वाला कोई तो होना चाहिए ना. जैसे फटाका फूटता है रास्ते में आपका, फटाका अपने फूटता है क्या? जाके उसको लगाना पड़ेगा ना माचिस, then it will blow. अपने आप कुछ भी नहीं होता है. There has to be some cause behind this, right? So this is first thing, that is creation implies creator, right? It makes sense, right? It really makes sense. Those who are atheists, they have to answer all these questions, and they really can't. Of course, you don't go and argue with them. It's not the way to convert them. But we should know how things are scientifically explained in our Vedic literatures, right? Then second thing, there are laws. Are there laws? अब इस घर का लॉ क्या बताइए? What is the law inside this home? आपका डिनर टाइम का लॉ रहेगा, एक ब्रेकफास्ट टाइम का रहेगा, बराबर है कि नहीं? पूछ रहे हैं आपको. You have. You can't be whimsical.
You can't be any time, अभी लंच बना के दो रात को 2 बजे, नहीं जमेगा. स्कूल जाना है बच्चों को. There is law. बच्चों को स्कूल जाने उनका टाइमिंग है, बराबर. Now who has decided the timing for the school? School. और घर में किसने डिसाइड किया है? आप लोगों ने डिसाइड. अच्छा, माता जी बोल रहे हैं आपने डिसाइड किया है. Who is the Lord of this home? Right? So, इसी कॉमन एग्जांपल एकदम सिंपल. अभी घर से बाहर निकलते हैं, आप बोलेंगे घर में ज्यादा फिर झगड़ा हो जाएगा हमारा बाद में. So if you go outside home, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल में रूल रहता है. ग्रीन मतलब आगे बढ़ो, रेड मतलब स्टॉप. कौन बनाया ये सब? ये सब लॉज है ना. कौन बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया ना. राइट? लॉ implies lawmaker. Without lawmaker, how can there be any law? अभी जैसे सन है, the sun is setting at a particular time, sun is rising at a particular time. किसने बनाया भाई ये लॉ? तो ये दुनिया, it's not कि ऐसा randomly is going on. That's what they say. सब अपने आप आ गया और ऐसे ही चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता. Actually, खिचड़ी is there in their mind. They don't understand क्या हो रहा है. Both they themselves are confused. They want to confuse the people. But there are laws. आपका गाड़ी थोड़ा भी अगर स्पीड अगर ज्यादा गया, पकड़ते हैं ना आपको. कितना है? 80 स्पीड रहता है ना. हाँ. और अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो भी पकड़ते हैं आपको. राइट? You are under these laws and you can't escape them. हमारे एक बार हरे कृष्णा वाले डिवोटी जा रहे थे, तो somehow उन्होंने वो जो पुलिस वाले रहते हैं हवलदार देख लिया. तो यहाँ पे सिग्नल तोड़ा नहीं था. बोले रुको. बोले क्या हुआ? बोले मैं सिग्नल तोड़ा नहीं, क्यों आ गए इधर? बोले प्रसाद. बोले आप हरे कृष्णा वाले हैं, प्रसाद चाहिए. How can Hare Krishna people go without giving prasad? Right? So that's what our system is, prasad. कितना भी लेक्चर फिलोसॉफिकल होने दो, बाद में इधर से ही यहाँ तक जाएगा और वहाँ से यहाँ तक आएगा. Without prasad, you can't digest the philosophy. So similarly, one time our Guru Maharaj, Radhanath Swami, he had come from West. Previously, he used to stay 6 months in America, 6 months in India. तो ऐसे 6 महीने के बाद आए थे, उनको लेके जा रहे थे हमारे ब्रह्मचारी. And you must be knowing our Rishikesh Mahatlal, who is our main trustee there. Krishna Chandra Prabhu करके उनका नाम है, initiator. So he was actually driving the Maharaj. And then वापस वो मामा आ गया. Somehow बोला आपने सिग्नल तोड़ा. एक्चुअली प्रभु जी बोले सिग्नल नहीं तोड़ा आपने भाई, कहाँ तोड़ा है? तो बोले नहीं आपने सिग्नल तोड़ा है. तो हमारे और ब्रह्मचारी they actually try to explain कि अरे बाबा स्वामी जी आए हैं 6 महीने बाद, क्यों परेशान कर रहे हो? जाए तो मंदिर में, हमारे गुरु जी आए हैं बहुत लंबे समय के बाद. So you are not listening. बोले 500 रुपया फाइन लगेगा, 500 rupees पाउती निकाल. स्वामी जी से पैसा लेगा. तो बोलने लगा तो स्वामी जी कार में घूमते. ये एकदम एक्सपर्ट था. बोला स्वामी जी तो कार में घूमेंगे क्या? ऐसा वो समझाने की कोशिश किया, बाबा छोड़ दे, जाने दे. तो बाद में उसने क्या किया, वो महाराज जिधर बैठे थे नॉक किया विंडो में, बोला खोलो. महाराज एक्चुअली ओपन द ग्लास एंड देन जबरदस्ती महाराज का हाथ लेके अपने सर पे रखा. बोला पैसा नहीं तो ब्लेसिंग तो देके जाओ. See, this is the culture of India, where people understand the value of a holy man, value of culture, value of blessings. उसको पैसा चाहिए था, लेकिन बोला यार पैसा नहीं मिले, कम से कम आशीर्वाद तो दे दो. कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो देके जाओ. राइट?
And then of course Maharaj was saying that India is probably is the only country where you can bribe people with blessings. So like that, there are rules, right? So there are traffic rules, there are different rules. All these rules, they are actually made by some government authority, right? So laws implies law maker, creation implies creator. There can't be any laws, just पता नहीं कैसे अपने आप आ गया लॉ, ऐसा थोड़ी होता है यार. फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो भी लॉ है. Yes. Yes. फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी रूल रहते हैं, कितना फ्रीडम से बोल सकते हो, राइट? इससे भी एकदम सिंपल कॉमन एग्जांपल देखिए, जैसे आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट, कोई आपने वेजिटेबल का प्लांट देखा है? टोमेटो ग्रो करते हैं आप लोग? टोमेटो, एप्पल का देखा है? मैंगो का देखा है? मैंगो को पक्का देखा है. हमारे जमीन में लगी बात है, हमारे ग्रो करते हैं या तो पॉट पे. मैंगो ट्री का मैंगो आता है उसको, कि खाली शो वाला ट्री है? आता है. ओके, तो मैंगो ट्री को मैंगो ही क्यों आता है? कभी क्वेश्चन किया? सीड्स जो डालने बीज जो बोगे वही उगेगा. क्यों लेकिन ऐसा? Why? that's a law. That's the law. Yes, correct. That's something programmed. आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना आजकल? आजकल तो प्रोग्रामिंग का जमाना है. ये ऐप आता है उसका प्रोग्रामिंग, ये सॉफ्टवेयर उसका प्रोग्रामिंग. जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसके हिसाब से काम करेगा वो, राइट? जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग वाला डिवाइस है, इसमें एक प्रोग्रामिंग है, राइट? रिकॉर्ड होता है. सिमिलरली फोन है आपका, उसमें प्रोग्रामिंग है, उसमें आपका वो फंक्शन चलता है. चार्जर का अपना प्रोग्रामिंग, चार्जिंग करता है. सिमिलरली मैंगो ट्री का अपना प्रोग्रामिंग है, मैंगो ही उसमें से बाहर आएगा. कभी ऐसा नहीं हुआ मैंगो ट्री को पेरू आया है, जैकफ्रूट ट्री में बनाना आया, कभी हुआ क्या ऐसा? तो इंटेलिजेंट माइंड शुड आस्क द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है. It's a common sense, but it's very uncommon, unfortunately. We don't inquire. जैसे a man and a woman, when they come together, they give birth to a child, which is human, right? और कभी ऐसा देखा नहीं आपने, एप्पल के पेड़ के ऊपर बेबी लटका हुआ है, अरे एप्पल के पेड़ में बेबी पैदा हो गया, हुआ क्या ऐसा कभी? हाँ, बर्ड्स का नेस्ट है, बेबी पैदा होएगा बर्ड्स का. Okay, that is side topic. That is just to give you break for few seconds. Break from touching your, brain. ज़्यादा heavy हो गया तो फिर घुसा याद आ गया. You are all with me? Yes. Say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, जो पेड़ है उसका उसको ही वैसा ही फल आएगा, राइट? उसके अलावा उसमें कुछ नहीं आएगा. गाय से गाय का बछड़ा आएगा. Ants they will give rise to, give birth to their baby ants. Human they will give birth to their human baby, right? So like that, these are laws. So creation implies creator. Law implies lawmaker. Two things. Then third thing, there is an order and design in the world. There is a proper order and design, right? Let us take an example. इस घर के अंदर कौन सा लाइटिंग कहाँ होना चाहिए, किसने डिसाइड किया है? But on whose command? एक पर्टिकुलर लाइटिंग लगा है अपनी, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे, right? और different timings you must be having different lightings, right? सुबह अलग लाइट होता है, आफ्टरनून अलग, डिनर के टाइम में अलग, रात को अलग, सोने के बाद कुछ अलग. So this lighting is designed by us. Yes. So similarly, ये तो एक छोटा lighting है, and our sun is a big bulb. sun क्या है? बड़ा बल्ब है. उसका भी lighting
कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो भी डिसाइडेड है, राइट? एंड दिस इज द ओनली लाइट प्रोबेबिलिटी व्हिच डजंट गो ऑन हॉलिडे, राइट? हमारा कभी कभी खराबी हो सकता है, उसका आज तक खराबी नहीं हुआ है. That's how perfectly designed. And if you see the distance between Earth and Sun, थोड़ा भी डिस्टेंस अगर कम होगा, मतलब ज्यादा अगर क्लोज आ गया, will burn to ashes. थोड़ा दूर गया, will freeze. कितना particularly and systematically distance, you know, सेट किया है, और वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, कभी ना आज तक हुआ है. कभी सुना है आपने? There is accident between two planets. दो planet, they are also revolving, right? They also have their speed limits. जैसे हमारी गाड़ी का लिमिट है, वैसे भी सबका स्पीड लिमिट है. We have never heard they collide with each other and there is a big blast. पर हमारी गाड़ियों का ब्लास्ट होता है, right? कितना सिस्टमैटिक और परफेक्शन है नेचर में, ऑर्डर, right? And let us take another example. आपके घर के अंदर का वाटर टैंक, आपके अंदर वाटर टैंक रहेगा, राइट? बिल्डिंग के ऊपर रहेगा या नीचे पंप से आता है वो ऊपर. So this water tank actually who decided कि यहाँ पे होना चाहिए, इतना ही भरना चाहिए, और वो भी जो प्रॉपर रहेगा उसने डिसाइड किया होगा, राइट? So like that, if you see in the sky, in the clouds, कितना पानी है clouds के अंदर? Tons and tons of, you know, liters. ये इतना पानी वहां तक कौन पहुंचा है? ऑर्डर है कि नहीं? There is a design and order. इतना सब सुनने के बाद भी लोग बोलते हैं भगवान किधर है? इतने सारे प्रूफ्स हमें मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, राइट? You have question, will come back to you. No, I just wanted to give one more example. Okay, Law yeah. and order. Yeah. I mean, order and design. So every morning there's an uncle over here जो सुबह pigeons को खाना डालते हैं. Exactly 8 बजे वो खाना डालते हैं. But there is an order कि only the pigeons will eat first, the crows will eat next, because the crows are busy guarding the pigeons so that the kites don't come and eat them. Oh, So you know, if you actually notice it, you can see the law and order yes. that they have designed, that nature has created. Perfect example. Living example. Yes. With that you all can prove the existence of God. Every morning Yes. it's there. तो आपको एक रिकॉर्डिंग करके भेजना पड़ेगा. We can. Actually, we can. नहीं, और एक बार क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड को मैं इतना बिलीव नहीं, थोड़ा थोड़ा बिलीव करती थी. एक्सीडेंट हो गया था सतारा साइड में कार में, तो मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में था. डॉक्टर बोलता है, मैं रात को, मुझे कुछ पता नहीं था पूना का, तभी बहुत साल पहले की बात है. तो डॉक्टर बोलता है कि इसको अभी बिना नमक के खाना देना पड़ेगा, बिना हल्दी के, इसका सर्जरी है सुबह. मैंने घर तो यहाँ है नहीं, ना मुझे यहाँ का आजू बाजू कुछ पता है, मैं आसाम से आई, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है. तो परेशान, डॉक्टर ने यहाँ चाय का अरेंजमेंट करा के खाने की कोशिश करता हूँ कहाँ से आ जाए. तो मैं परेशान थी. मैंने एक ओल्ड लेडी है, बोला लेकिन क्या हुआ, क्यों उदास करती है, क्या करूँ, उनको खाना कहाँ से खिलाऊँ, खाना का सिस्टम ये हॉस्पिटल में नहीं. एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ अचानक से, तो वहाँ बस वाला लेके गया था, उठा के उनको वो हॉस्पिटल में रख दिया. तो बोलती क्या हॉस्पिटल, बहुत गरीब लेडी थी, मेरे को दाल बना के बिना हल्दी के, बिना ऑयल लेके आई, थोड़ा पाव लिया, मतलब कोई भगवान ने उसको भेजा है. फिर ऐसे स्लो बाय स्लो बिलीव होने लगा कि इंसान के रूप में ही कोई भगवान की हेल्प करने. Correct. So there is order and design and arrangement, right? Fortunately, yeah, unfortunately, जो लोग, those who are not pious, even after undergoing through these positive examples in their life, they don't tend to move towards God, and that's why association is required. In the association, however, you know, anti-God we may be, but we will start developing devotion for the God gradually, eventually. So like that. So this is one example, and there is one more example of pen drive. Pen drive आपका रहता है, या आजकल कार्ड आता है, SD कार्ड आता है, कितना उसके अंदर डाटा रहता है? So much. 32 GB, 64 GB, right?
बट आप अगर नेचर में देखेंगे एक बनियन ट्री का एक ये लीजिए फ्रूट अंजीर देखा है? उसके अंदर कितने सीड्स रहते हैं एंड ईच सीड इज एक्चुअली ए ह्यूज ट्री इन इटसेल्फ which eventually will give rise to a big tree. तो एक छोटे से सीड के फ्रूट के अंदर there are so many trees and that one single seed is programmed in such a way जब आप उसको लगाएंगे इतना बड़ा पेड़ आ जाता है उसमें से. क्या इंजीनियरिंग है सोचिए जरा आप. What an engineering. Similarly human being भी ऐसे ही है ना. When a sperm and egg they unite, the creation of the living entity is there. The human being is born out of that. Right? इतने सारे चमत्कार नेचर में देखने को मिलते हैं हमको. You know, there was a story of actually one person. He once upon a time he saw a pumpkin plant. Pumpkin plant पता है आपको? भोपले का. उसका लता रहता है. Yes, and इतना बड़ा बड़ा भोपला आता है उसके ऊपर. And then he saw a banyan tree. इतना बड़ा पेड़ और इसमें छोटे छोटे फल. तो बोलने लगा भगवान को अक्ल नहीं है. इतने बड़ा पेड़ और इतना छोटा फ्रूट और भोपले का इतना छोटा सा लता क्रीपर और इतना बड़ा भोपला. That's why he was thinking like that and then थोड़ा थक गया वो बनियन जो ट्री रहता है ना उसके नीचे सो गया. Then when he was taking rest, ऊपर से कुछ समय के बाद एक फ्रूट छोटा सा from very high top branch of that tree straight away fell down on his head. बड़ा लगता है. हाइट से अगर गिरेगा तो दुखता है. बड़ा पका हुआ फ्रूट था. Then he realized, अरे अगर इस पेड़ के ऊपर भोपला लगा होता तो आज मेरा भोपला हो जाता. Then he realized नहीं भगवान ने जो किया है ना परफेक्ट है. Whatever is arranged in the nature by God is exactly perfect. आपके प्यूरिफिकेशन के लिए जिसको अरेंज किया है that is perfect. All of us have at least one person in our life meant to purify you. है कि नहीं? Custom made. Exactly जो जैसे चाहिए वो बराबर. The whole world will agree on some issues, but that person will never agree. नहीं. कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो, he will not agree. Why? Because it is dictated by God within his heart to behave like that in order to make you realize that there will be some things which will be beyond my control. At that time, I will understand, okay, there is some controller. And I need to inquire and ask, कब होगा ये पूरा? ये control कब पूरा होगा? कब छूटेगा purification? Right? So, if you observe the nature around us, very common sense through, you will realize and understand that there is God. And it requires not only observation but faith also. You know, scientific understanding, faith. एक बार नारद मुनि ऐसे ही नारद मुनि he was going to Vaikuntha planet to meet Lord Narayan. And then जाते जाते उनको रास्ते में एक कॉबलर मिला. कॉबलर मोची. उसने बोला कि जरा भगवान को पूछ लेना कि मैं उनके धाम में वापस कब आऊंगा. When I will come back to Godhead. बोला ठीक है पूछता हूँ. थोड़ा आगे जाने के बाद एक ब्राह्मण था. Brahmin and cobbler, there is a huge difference between them. Brahmin is supposed to be learned. नारद मुनि बोले वाह ये प्रश्न उन्होंने पूछा आप भी पूछ रहे हैं. He also asked, please ask Lord Narayan that when I will go back to Godhead. Narad Muni said, yes, I will ask. And then he went to Vaikuntha planet, he met Lord Narayan. And then he asked Lord Narayan that these two people, they have asked these questions. A cobbler and a Brahmin. They are asking when they will come back to Godhead. So Lord Narayan said that the cobbler will come back to Godhead in this lifetime only. But the Brahmin, he will take a lot of time. He will not come so soon. आप में से कोई ब्राह्मण होगा तो ऑफर तो ना भाई.
And then Narad Muni was astonished. He said, "Arey, aise kaise? Brahman is supposed to come sooner because he is worshipping you. He has his intelligence and scriptural study and all that." So Narad Muni, Lord Narayan said to Narad Muni, "Just tell them, they will ask कि जब आप भगवान नारायण से मिले तो भगवान नारायण क्या कर रहे थे पूछेंगे तो उनको बोलना that Lord Narayan was trying to thread an elephant through the eye of a needle." समझे कि नहीं समझे? एलिफेंट पता है आपको? निडल पता है? निडल का आँख होता है, आँख मतलब जहाँ से कभी अगर सिलाई किया आप लोगों ने कभी उसमें से धागा निकालते हैं। तो भगवान क्या कर रहे थे? एलिफेंट को निकाल रहे थे सुई के जो आई रहता है, आई ऑफ द निडल। जाओ उनको बोल देना दोनों को। तो नारद मुनि said yes. So then he came down and he met the Brahmin. तो उसने पूछा, भाई भगवान ने क्या बोला, क्या समाचार है? When I will go back to Godhead? तो बोला कि भगवान ने कहा कि आपको टाइम लगेगा थोड़ा। And then he became little morose. बोला अरे ऐसे कैसे? अच्छा उसने फिर पूछा भगवान क्या कर रहे थे उस समय जब आपने प्रश्न पूछा? Then Narad Muni said, actually that time Lord Narayan he was trying to thread elephant through the eye of a needle. Brahmin said, what? How is this possible? ऐसे कैसे हो सकता है? हाथी इतना बड़ा, सुई मतलब उसके बॉडी का एक बाल भी रहेगा तो एक बाल के जैसा ही है ना? How is this possible? It's not possible. तो नारद मुनि समझ गए. Then he moved ahead. Then he met the cobbler. Then he asked, cobbler asked, गुरुजी मेरे लिए समाचार क्या है? What did Lord Narayan said? बोले आप इसी जन्म में भगवान के पास आएंगे। लेकिन फिर नारद मुनि ने कहा, देखो जब मैंने ये प्रश्न भगवान से पूछा, तो that time Lord Narayan was trying to thread an elephant through the eye of a needle. तो कबूतर बोला, अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है? What is astonishing in this? It is very simple. My Lord is so great that he can insert big lakhs of trees within one small fruit. Remember the example of a fig? समझे कि नहीं समझे? If he can do that, why can't he do this? Believe. Not just believe, but this is possible for the Lord. Faith. Yes, it's a faith also, and it's a scientific faith. It's not a blind superstition, just based on bhavnatmak, emotional. Bhagavad Gita is very scientific. जो भी रहेंगे, yes, जो भी रहेंगे. But what is not possible for the Lord? क्या possible नहीं है? 9 महीने आपके गर्भ में बच्चा रहता है माता के, कौन उसको मेंटेन करता है? Who maintains him? Can the scientists maintain a baby in the laboratory for 9 months? आज तक किया है क्या उन्होंने? माँ भी नहीं कर सकती जिसके हाँ. वो भी नहीं कर सकती. And when actually for a whole lifetime there is no milk in the breast of a mother. Suddenly when she undergoes pregnancy and the baby is born, milk starts flowing from her breast. कैसे? अचानक कैसे निकलता है breast से milk? पहले क्यों नहीं निकला? Because God understands now the living entity is very small. He cannot eat food grains. He needs milk. So all these arrangements are there in the nature. We only have to open our ears and eyes and see through or in the light of scriptures. Then it's very simple to come to a conclusion that there is an order and then there is a design. Systematic order and systematic design, right? I'll give you one more example. Is there any, you're dealing with business, right? Is there any factory or any production house where byproduct of one
industry is used as a main raw material for another industry, and byproduct of that industry is used as a raw material for this another industry. Complicated हो गया? No, it's समझ में आया ना? yeah, है कोई ऐसा इंडस्ट्री? जैसे कंपनी ए, कंपनी बी, ए का बाई प्रोडक्ट बी के लिए मेन रॉ मटेरियल है और बी का बाई प्रोडक्ट ए के लिए मेन रॉ मटेरियल है. कोई है ऐसा? Is there any industry existing like this in the man-made industry? कोई है? नहीं मिलेगा. Certain part you said. I said main raw material. What certain part? कितना extent use कर सकते हो लोग? To what extent they can use? ऐसा कोई इंडस्ट्री है जिसका by product is 100% raw material for another industry, and exactly जिस इंडस्ट्री को दे रहा है उसी का बाई प्रोडक्ट ये पहले वाले इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल है. Human body, when you buy product, fertilize, that fertilize to make another, Yes. So this human body is not, not human body exactly, but anybody. yeah, anybody, is not made by any scientist. Is made by God. उनका possible. And even Animals. yeah, केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे, आपको फोटोसिंथेसिस पता है? Plants में. थोड़ा बाउंस जा रहा होगा तो 2 मिनट पेशेंस रखिए, हो जाएगा, कवर अभी. There is a process of photosynthesis and there is a process of respiration. In the process of photosynthesis, 2 चीजें यूज की जाती है. क्या यूज की जाती है? इक्वेशन पता है आपको फोटोसिंथेसिस का? carbon dioxide is converted into कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन निकलता है ना बाहर, बराबर? सिंपल है. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, they both combine to give carbohydrates, and plus oxygen is given out as a byproduct. That oxygen as a byproduct is used by human beings in respiration, and they give out carbon dioxide, which is byproduct for Plants. plants. प्लांट के लिए बाय प्रोडक्ट हमारा जो है मेन रॉ मटेरियल यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट से निकलने वाला मेन रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हमारे लिए मेन. कितना सिस्टमैटिक है भाई नेचर. कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नेचर में नहीं होता है. एवरीथिंग इज परफेक्टली यूटिलाइज्ड. इतना सब ऑर्डर अरेंजमेंट अपने बात है क्या? इज इट हैपनिंग ऑटोमेटिकली? इज इट हैपनिंग ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली हो रहा है. बट हु इज मेकिंग दैट हैपन? हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद लेते हैं. बॉडी के अंदर प्रसाद कैसे जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे फेकल मैटर में निकल जाता है, ये सब प्रोसेसिंग अपने आप होता है. आपने कभी बैठ के सोचा है अभी मैंने खाया अभी पचाता हूँ? नाउ लेट मी डाइजेस्ट, लेट मी सिट एंड डाइजेस्ट. थोड़ा विगरस एक्सरसाइज करके डाइजेस्ट करता हूँ, है ना? ऐसा होता है कभी? नाउ लेट मी पंप ब्लड इनटू माय ब्रेन. ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, लेट अस सप्लाई द एक्स्ट्रा ब्लड एंड ऑक्सीजन. होता है कभी? अरे हाथ में थोड़ा सा पावर कम है, let us supply some oxygen and blood. Everything is functioning systematically, automatically, as per the design of the Lord. Isn't it? And even if you see, एक एकदम सुंदर एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल. रोज प्लांट हैज अ रोज फ्रेग्रेंस, बराबर? और अगर रोज का अगर सीड लेंगे, seed, does that seed has a fragrance of the rose? But when you plant that rose, plant in the soil, वो soil में से निकालता है बाहर fragrance को. That fragrance is there in the soil. All the different kinds of, scents, flavors, they are in the earth. They are extracted from there by the plants. Isn't it? क्या programming है देखो भगवान का.
What a systematic programming. आप ऐसे मिट्टी उठाएंगे तो उसमें से आपको रोज नहीं मिलेगा. But when you plant the rose seed, उसमें से फिर रोज आता है. And the rose has a beautiful fragrance, beautiful color. मतलब in that soil there is a color, there is a fragrance, everything is there. You need to know how to extract it. Right? Similarly, this human life, it has everything that we want. We need to extract it by the process of meditation, by the process of sadhana. And that's why I keep again and again saying that, हमको क्या करना है? Chanting करना है. Because that's the process, right? भगवान ने इतना सब कुछ हमारे लिए systematic arrange करके दिया है. The perfect place, the perfect people, whatever best we can have. Why don't we utilize that? You know? देखो ना अभी समझो say for example, अगर हमारा when we try to eat something, we actually smell with the nose, right? Eat with the mouth. The primary two functions when we want to have some food item, पहले हम देखते हैं और फिर टेस्ट करते हैं उसको, right? टच करते हैं. समझो अगर उल्टा पुल्टा बना दो भगवान ने, आपकी आंखें पीछे के साइड में, मुंह आगे और और कान इस तरफ कहीं दूसरी जगह पे, तो आपको अगर प्लेट देते प्रसाद का तो आप क्या करते पहले उल्टा, पहले देखने तो भाई मुझे कैसा दिख रहा है, ओके देख लिया, अभी फिर रिवर्स, फिर अभी खाने दो मुझे. पर ऐसा है क्या? कितना सिस्टमेटिक बना है, देखना है स्ट्रेट, खाना है यहाँ से. This is a design so systematically made. अब इसको कौन चैलेंज कर सकता है? Only those who really have made their mind. आप कितना भी समझाएं, हम तो नास्तिक ही रहेंगे. वही आपको चैलेंज कर सकता है. And that's why many of the times it is not actually fruitful to argue with these fools. They will never understand unless they have a good fortune of meeting the holy saints and serving them. Then only their good fortune will arise. Because जैसे मैंने कहा, it's not a question of our intelligence. Even after understanding so many things, still we may not become devoted to God. Like a Brahmin, it's not just a question of reading some scriptures or trying to come to some logical, rational conclusions, which is in itself required. But beyond that, you need to have a faith and a service attitude. When we serve and when we have a desire to become devoted to God, then God will be sent in our life. So that's the summary and that's the essence. And one more thing is remaining, but I think we'll cover this in the next session. I have a question. Is being a Nastic part of your karma? No, why? So why are some people not? It's part of your free will. All of us have free will. Yes, not everyone. अगर वो नास्तिक अंदर से साफ है, is not doing bad things, कुछ भी गलत नहीं कर रहा, I think वो नास्तिक. But ऐसा हो नहीं सकता ना माता जी. It cannot happen. It cannot happen. आप बोल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन they are doing social work, they are distributing food, they are doing nice things. Yeah, there are so many Nastics. But do you know, at the end of our life, what are you trying to save people? If you think that I supply some food and clothes, मैंने किसी को घर दिया and I'm helping that person, are you really helping that person? If he's ultimately going to die, if he's ultimately going to meet destruction, get diseased, get old, are you really helping him? The real help is when you help him to get out of these miseries. That's the real. I'm not denying that we should not help. We should help at whatever level we can. Even ISKCON has Food for Life. We also distribute food, but we distribute it as prasad. So that food will not only nourish their bodies, but will nourish also their heart. Because ultimately we are not hungry for food. We are hungry for love. We are hungry for affection. We are hungry for care.
और कौन दे सकता है हमें ये? However you may try to get that in the material world, you will always remain incomplete. इतना लोगों से प्यार मिलने के बाद भी हमें लगता, see that's why unless there is a connection to the spirituality, our philanthropic work is not complete. It always remains incomplete. बराबर? तो आज अगर आपने यहाँ पे जन्म लिया है, स्कूल में गए हैं, बड़े हो गए हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, मेरा सपना पूरा हो गया, मैंने घर पाया, बंगला गया, गाड़ी, बच्चे, नेक्स्ट लाइफ में क्या होता है फिर? You continue the same thing. Again you get born, again you go to school, again you struggle, again you get. And if you born as a human being तो अलग बात है. अगर if you are not born as a human being, if you are born as a cat, as a dog, as a cockroach, क्या होगा? And birth तो होना है. Last time हमने डिस्कस किया था. It's a fact. So our philanthropic work is actually incomplete without connecting it to God. Ultimately, we all are longing for that love. Yeah, that's what the last actually. एक छोटा सा इसमें connected है. We all have demands and urges, right? Demands है. When there is a thirst, there is a water. There is hunger, there is a food. Similarly, when we want to get loved, we need love. We don't need big apartments. We don't need big fashionable cars. We don't need smartphones. We need love, right? If you need love, you cannot replace it with some material things. अब ये नहीं बोल सकते आपको प्यार चाहिए, ये लो इतना बड़ा अपार्टमेंट आपके लिए, ये लो ये सारी 50 गाड़ियां, ये लो हॉलिडे टिकट, जाओ घूमो. नहीं हो सकता. What जिसका जो खाना है वही देना पड़ता है. कार का फ्यूल क्या है? हमारा फ्यूल क्या? पेट्रोल है क्या? आपको आज अगर लेक्चर में प्रसाद के जगह पेट्रोल गाड़ी का निकाल के मार देते, लो पेट्रोल, जमेगा क्या? नहीं जमेगा. जिसका जो फूड है उसको देना ही पड़ेगा. So similarly, our food is actually love which we are. So अभी आप प्रसाद लेंगे तो इसमें क्या है? There is a love of और आशीष प्रभु and नेहा माता जी. That nourishes our heart. It's not just food. There is a love inside that. That is the most important element. Without that, the food is actually doesn't satisfy you. है ना? इसलिए देखिए, होटल का खाना और घर का खाना क्या फर्क होता है? होटल का खाना बड़ा टेस्टी हो, but that is just for the tongue, but not for the heart. घर का खाना माँ बनाती हो, किससे बनाती है? Out of love. And that love nourishes our body, mind, that nourishes our character, that makes us a good human being. So that's the whole thing. And of course, बहुत साल पहले माइकल जैक्सन आए थे इंडिया में, एंड एक लड़की थी, वो स्टेज पे गई तो माइकल जैक्सन ने उसको हग किया. वो लड़की मतलब इतना ये हो गई, माइकल जैक्सन ने हग किया मुझे, माय गॉड. And then she didn't take bath for next 15 days. तो घर वालों ने पूछा, भाई क्या हुआ तेरे को? स्नान नहीं करेगी? मम्मी कैसे स्नान कर सकती हो? मुझे माइकल जैक्सन ने हक किया है, उसका महाप्रसाद मुझे मिला है. I can't take bath. So these people are stupid, foolish. But what that? There is a desire to worship someone, adore someone, love someone, right? ये जो इच्छा है ना हमारे किसी को प्रेम करने की, that's the root of our, yeah. Without that we cannot survive. अरे शेर का बच्चा देखा कितने वायलेंट करते वो लोग, मारामारी करते थे, but even शेरनी का छोटा बच्चा उसको प्यार करती है. Snakes, even they love their baby snakes. Snakes by nature they are envious. Their default setting is किसी को दिखा काटो. But even they love their small baby snakes, isn't it? So that love nature. So what to speak of human beings, those who are highly evolved in their consciousness.
So our need is actually love. And when that love is fulfilled, we are satisfied. Then we don't need so many things of this world. We will not be distracted, we will not be disturbed by so many ups and downs of life. We can then very smoothly carry on. So Bhagavad Gita is not only just for our developing devotion, but even in this world, if you want to live peacefully, Gita is required. Right? ऐसा नहीं कि devotee भक्त बनना है इसलिए गीता नहीं. Even to live life materially properly, Krishna says in the Gita. It's the best No? teacher. What is that shloka in the Gita? 6th chapter. युक्त आहार विहारस्य युक्त चर्चस्य कर्मसु युक्त स्वप्नमोदस्य योग भवति दुःखः. Sleeping on time, getting up on time, eating on time, recreation on time, as per the need, is very much required to have a steady and balanced life. You can't haphazardly रात को 2 बजे उठ के अभी जिम जाना है, या फिर दोपहर को 2 बजे ऑफिस में काम कर रहे हैं, अचानक पिकनिक जाना है. ऑफिस में हो ना, ऑफिस का काम करना पड़ेगा. So life is very, systematic. It has to be very systematic. That's what Gita teaches us, right? So like that. So we'll see next time. Definition. The part 2 will cover in the next time. This is part 1. But through our, this analysis, we have come to a conclusion, a sound conclusion, that there is God, and we need God, right? So creation implies creator, law implies lawmaker. There is order and design, and there are demands and urges which are fulfilled, right? 4 things we covered, and we'll see the next part in the next class. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you everyone for your kind patience and tolerating. So we will have, You are telling us. so we will have a kirtan for some 5-10 minutes. Yes. And then I hope you all are chanting Hare Krishna mantra on the beats. Please start chanting, because this is the only way to connect with the God in this age and time. We can't do any meditation, hardcore, going to the Himalayas. We can't give in charity big palaces to temples. We can't host hundreds of people every day for the prasadam, right? So the simple way in this age, or we cannot worship, elaborate deities in the home. Although you can do in a small scale. The simple way is just to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So my humble request, take out at least 10 minutes a day. 10 minutes मिल जाएंगे आसानी से. And try to chant at least 1 round. यहाँ पे माता जी के पास beats रखे हुए हैं. So because हम लोग थोड़ा क्या इंटरव्यू स्पेस में तो कभी हम करते कभी नहीं करते, but as the Gita Progresses. and we start Bhagavad Gita, then we will begin with that also. But आप लोग सबको दे दीजिए जपमाला, है ना? बाद में आप घर में जब कीजिए 1 round every day. मुझे भागवत कथा. Bhagavad Gita. This is Bhagavad Gita. आप बोल रहे हो कि चैटिंग करना is the only way, but Yeah. But essence of Bhagavad Gita is chanting only. After Bhagavad Gita, what do you do? In the Bhagavad Gita, what is instructed? That take shelter of God. Chant name of God. Then we have to execute that right after that. And Bhagavatam के अंत में तो लिखा हुआ है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं. That's the last verse of Bhagavatam. वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुंचे तो भी कंक्लूजन दे दिया मैंने आपको. Even after you go to the entire Bhagavatam 18,000 verses, read. Final conclusion is chant the name of Lord Hari. By chanting that name, all the जीवन का जो कष्ट है खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, and then you will become blissful. That's the last verse of Gita. Sorry, Srimad Bhagavatam. Okay, so all of you please chant. घर में एक राउंड सिर्फ 10 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता है. कितना लगता है? Maximum 50. 10 मिनट एवरेज. 24 आवर में 10 मिनट नहीं निकल सकती. मैंने आपको इतना समय दिया है, weeks after week, so you can at least try to take out 10 minutes a day. The next time I will take a follow-up. Yes, Hare Krishna. Yes, now let us chant Sankirtan.
Hare
लोगों को जगाने के लिए रिकॉर्डिंग भेजेंगे. So a lot of things are happening. We should know that this is an opportunity, rare opportunity, right? Yes. Hare Krishna. So now we can proceed for the prasad. Prabhuji, next Monday is Holi, so we have the session as well as Next Monday is what? Which date? 20? Monday. Date? What is the date? 25th. 25th. Oh, 25th is actually Gaur Purnima in a temple. Yes, that is why I was asking. I think you all also play Holi at so We can skip. we will continue the session. Continue. We are free. We are free. Yeah, you can offer. I think I will not be free because that's the birth appearance day of Lord Chaitanya Mahaprabhu. That's called Gaur Purnima. It is a big festival in the temple, Yes. and I think I am one of the part of kitchen team. Okay. Yeah. So let's see. 2 days before we will take a call. Okay. Kitchen team, Yeah. Yeah. He's a very good cook. not good. All पेपर पे देख के करते हैं हम लोग whatever possible. ये गद्दा यहाँ से